there's a kind of logging operation on Dehradun Road where the eucalyptus trees which were more than 75 years old being cut and their logs and tops are being carried away by those poor people to use during the severe winter which will be prevailing after a month or so. So this is the kind. Well, I'm Dr.Sas.Biswas from Dr. PG Institute, and this is how the mechanized way of removing the logs. They use the power chain to cut the whole trunk once it has been fell down into cross sections, and then by the help of the crane they are lifted. So you can just see here the crane is being taken distance, and now it's going to turn like this. And so in order to remove these things, the electric wires are removed, and there is no supply of electricity for 4 to 5 hours, so sometimes more than that. So where they have to do the logging here, they are taking the eucalyptus. These are all eucalyptus hybrid or eucalyptus tutti and you can just see each of them are quite healthy. But in name of development, we do require. There is, you can see in the back, there is a tree awaiting for its slaughtering blow. So now, they will be just tying the logs and then take away. Even though I found the leaves are being used as smoke against the mosquitoes, and eucalyptus leaves have got that kind of the medicinal property. Look at this boy who is. इसको कहाँ क्या करेगा इसका बच्चा? इसका क्या करेगा? इधर क्या करेगा? तो मैं वीडियो बना रहा हूँ. क्या करेगा इसका? लकड़ी जलाने के लिए ले रहा है? अच्छा, तो ये सब कितना टाइम चलेगा? इसको खाना भी बनेगा क्या? अच्छा, so he says that even this will be used for cooking food as a calorie. And look at this, they are looking. So compared to the logging operation in hills where the elephants are used to drag these logs, they tie it. So this is how the crane is working. They take back and lift it, and then I'll do it just there. So I can find say 5 or 6 persons working for the whole of the operation to be completed. Whereas in South American countries, I found they have got a single crane which does the whole job, chopping, lopping, and then picking up tools in the small truck. This is how these are placed. And let me see if I can make out to show you more in details how it appears. And here I'd just like to share that how they are working. So there are 3 of them, 5 persons, and the whole thing. And here is what we do. They put the girdle, put this girdle, and so the girdle they use the power chain to make this here. You can just see here. This is here. This is how we see about the operation, which is being carried out here. The crane being trained to pick up here, and gentlemen, आप यहाँ पे इनको इसके साथ काम करते हैं, आपको कितना पैसा मिलता है एक दिन में?
700 रुपये दिहाड़ी। 400 रुपया जी। पूरा दिन काम करते हो? 400 रुपये में हो जाता है? 700। हाँ, 700। 700। और ये जो है वो ठेकेदार का है, उसके पास ठेकेदार लगाया हुआ है कोई? जी। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, आप ये भी आपके साथ ही करते हैं ना? जी। अच्छा, कितने लोग हैं इसको, एक पेड़ को काटने में कितना लोग? 10-11 लोग हैं जी। अच्छा, 10-11 है। तो इंस्टेड ऑफ व्हाट इज सेड ऑफ 5 or 6, I learned that there are 10 to 11 persons. So now they are picking up the top one. Truck is all filled up. इस ट्रक में कितना होगा? इस ट्रक में 13 घन मीटर माल, 12-13 जी, घन क्यूबिक हाँ, मीटर घन माल होगा। जी। और एक बात बताओ मुझे, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये एक पेड़ का ही है पूरा? नहीं जी, यहाँ 3-4 पेड़ है बाबू जी। ठीक है। और कितना ऊंचा पेड़ होगा वो जिनको काटा है? काफी ऊंचा है जी। ओके, हाँ, काफ़ी ऊंचा पेड़ है और उसको काट के इसमें डाला हुआ है। जी। तो एक दिन में कितना पेड़ काटते हैं? ये तो लैंड के ऊपर बात है। ये वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन है जिसको बंद करना पड़ता है, स्विच ऑफ द लाइट एंड और सारे हैं, इनको बचाने भी पड़ते हैं। दो हाउसेज ऑल्सो, उसको घर पे भी। तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर डूइंग द लॉगिंग ऑपरेशन अलोंग द मेन रोड। एंड यू कैन जस्ट सी हियर, एक पेड़ को शिफ्ट करने में कितना टाइम लगता है? ये जैसे उठा रहे हैं, इसको उठा रहे हैं पूरा पेड़। हाँ, बाया पेड़ सुबह से लेकर दोपहर तक कटता है। अच्छा, हाँ जी। एक को काटने में काफी क्योंकि लोपिंग करना पड़ता है बाबू जी, पब्लिक को भी देखनी पड़ती है। पब्लिक, एक बात बताओ, घर को भी ये यहाँ पे जितने पेड़ काटे गए हैं, कहीं पेड़ों में अंदर सुराख या कीड़ा मकोड़ा बीमारी, कोई बीमारी नहीं लगी? इसका मतलब यह है कि यूकेलिप्टस में वैसा कोई बीमारी नहीं है। हाँ। तो दिस इज व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है तुम्हारा? नदीम है। हाँ, नदीम। और इनका नाम? आपका नाम? कलीम और नदीम। शुक्रिया, आपने ये इन्फॉर्मेशन दिया। तो आप लोग, तो ये तो हर एक कोई कर नहीं सकता, आप ही लोग को कई हुनर है जी बाबू जी, ये जिनमें आप कर सकते हैं। हाँ, ये और इसको तो एक दिन में कितना ट्रक माल चढ़ाया जाता है? एक ट्रक जी बाबू जी। एक ट्रक जी। ये पूरा दिन भर में एक ट्रक? पूरे दिन भर में एक ट्रक। अच्छा, 4 दिन भी लग जाते हैं बाबू जी काट। हाँ, 20 टन ले जाता है माल। हाँ, 20 टन। हाँ, ये क्या है? ये मशीन है जी। इसको काटेंगे क्या? इसको काटेंगे? इसको काटेंगे ना, ये क्या? उठाओ इसको, ये वीडियो बन रहा है। अच्छा, ये पावर चेन है? पावर चेन नहीं। हाँ, पावर चेन है ना? मशीन है। पावर चेन मशीन है। ये पावर चेन नहीं है, मशीन है। अच्छा, पेड़ काटने वाली मशीन। पेड़ काटने, इसका तो अलग मशीन होगी ना। इसको काटने के लिए ये वाला है। अभी ये तो कटा हुआ है। अब तो पूरा ही जाएगा। अब कहीं दिखाओ ना, फिर काट के दिखाओ कोई है? काट के दिखाओगे? अभी नहीं, खराब हो जाएगी बाबू जी। हाँ, पैमास खराब हो जाएगी काटने से। के लिए बना रहे हैं आप? वैसे पढ़ाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए। ये सब्जेक्ट है ना, वो जो बच्चे लोग बना रहे हैं। लाइट चल रहा है। हाँ, लाइट। आपका नाम? अर्जुन। हाँ। तो इसको अभी नहीं चलाओगे? हाँ, इसको जैसे खाली चला के दिखाओगे जरा? स्टार्ट करके दिखा दो। स्टार्ट करके दिखा दो। हाँ, जैसे it has got the saw in front and then it started. This is the power.